the sky will be blue. Sun is yellow by the way. Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston. With me, of course, Uzair Hassan. And अब बात करेंगे आज के हमारे celebrity guest से, who is joining us all the way from Mumbai. She is known for her adorable actions. You might be familiar with her from the very amazing and the most prominent TV commercials from the 90s, the Neema Sandal Girl. And उनकी जो पहचान है वो जानी जाती हैं द मोहब्बतें गर्ल, वो जानी जाती हैं फ्रॉम द मूवी आवारा पागल दीवाना, वो जानी जाती हैं फ्रॉम हर endorsements throughout these years. We have none other than Preeti Jhangiani joining us all the way from Mumbai. Hello Preeti, how are you? Thank you so much for being over here, and thank you so much for being part of Good Morning with NTV Houston. It's a pleasure having you. And सबसे पहले आपको मैं वेलकम करता हूँ, एंड उसके साथ साथ ही मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ दैट ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक में जो है हर एक कुछ ना कुछ कर रहा था, किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व था. कुछ लोगों ने फिगर आउट किया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. So with that we have seen that many people try to find out their hidden talent. अगर आपके hidden talent के बारे में बात करूं, so meanwhile आपने कौन सा hidden talent discover किया अपना, थोड़ा सा इसके बारे में भी viewers को बताइए. Hi Uzair, thanks for having me on your show. And yeah, I'm doing okay, keeping well. Hidden talent की बात करें तो I don't know. I've been painting. I've been honing my canvas painting skills, something I used to love to do when I was in college. And yeah, trying out a lot of new recipes, which is what everyone seems to be doing since most of us don't have our regular help at home. And yeah, and we have all these products that we need to use. So yeah, I've been trying my hand at a lot of cooking skills, and I'm not too bad. Little bit of baking, but mostly cooking. Okay, and with that Preeti, आपने बताया कि आप कि कुकिंग में आपका कुकिंग में इंटरेस्ट था, you were canvas painting, and definitely you were doing something that was entertaining you as well. Preeti, इसके साथ साथ I really wanted to know, because many of the people are unclear about this selection criteria in Bollywood. कि क्या selection criteria होता है? We have seen that you have learned classical dancing मोहब्बतें मूवी के लिए, एंड वो कोई एक दो दिन की प्रैक्टिस नहीं थी. रोज़ाना यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन प्रैक्टिस के लिए आपको एक शायद मास्टर आते थे, वो आपको प्रैक्टिस कराते थे. सो इज़ देयर एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया इन बॉलीवुड, या यूजली किसी को भी अगर हाँ उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल लगता है उसको ट्रेन किया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर रोल के लिए? हाउ डज दिस वर्क्स, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. The selection criteria is much like any other industry. I would say that there are auditions. And yes, sometimes the director and the producer have their preferences, and they call the actor, and then the actor trains for the particular part. If it's a biopic, then the actor will look at all the characteristics, the mannerisms. Sometimes goes into years. For Mohabbatein, in fact, I trained for 8 months, because the role that I had was that of a classical dancer. And I had not danced even a day in my life. Forget about classical dance, I knew nothing about any dance. So I trained in Kathak, Bharatnatyam, folk dance, the traditional Bollywood dance as well. I was trained by my Master Ji in these traditional dances, and then by Farah as well in Bollywood dance. So yes, a lot of preparation goes into these roles, especially if you're playing a particular role, or your role has a particular characteristic like that of a dancer. अच्छा प्रीति, you have mentioned that almost 8 महीने की ट्रेनिंग थी. There were different choreographers involved to train you for that particular role, and definitely जिन लोगों ने ये मूवी, almost सब ने ही ये मूवी देखी हुई है, लेकिन उसके अंदर definitely लोगों को यही लगता हो कि शायद आप क्लासिकल डांसिंग जो है बहुत ज़बरदस्त करती हैं, इसकी वजह से आपको शायद ये रोल मिला, बट दैट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द एक्चुअल रियलिटी. अच्छा प्रीति, मूविंग ऑन to the next part and the next question, which is getting very viral these days. हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं. टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, हमारे पास कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, हमने उनसे पूछा नेपोटिज्म के बारे में. सो राइट नाउ द फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक आप इसको कह सकते हैं कि 2.0 चल रहा है इस वक्त बॉलीवुड का.
सो डू यू थिंक कि जो ये एक्टर्स खासतौर से जो रीसेंट एक्टर्स है, द रीसेंट एज एक्टर्स, आर दे यूजिंग द नेम ऑफ नेपोटिज्म, या वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्क दे आर ब्लेमिंग नेपोटिज्म फॉर नॉट हैविंग सर्टेन रोल्स, या उस तरह का काम मिलना पॉसिबल नहीं है जो वो चाह रहे हैं कि उनको मिले एंड वो उस तरह परफॉर्म करें. सो क्या देखते हैं आप, इसको किस तरह देखते हैं इस चीज़? देखिए, मैं बिल्कुल बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं थी. आई वॉज नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली एट ऑल. लेकिन आई गॉट अ लॉट ऑफ लव इन बॉलीवुड, और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि आई एम एन आउटसाइडर. लेकिन मेरी बात अलग थी, क्योंकि मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ. Sometimes actors come from out of town, they're living, they have to pay their rent, they have to look after themselves, they don't have family here. So then it becomes very difficult for an actor who's out of town and who has no connection at all. They don't know where to go. लेकिन अगर नेपोटिज्म पर से की बात करें तो नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में है. जैसे ज्वेलर का बेटा ऑटोमेटिकली ज्वेलर बन जाता है क्योंकि वो बिजनेस इनहेरिट करता है. तो इट्स द सेम इन बॉलीवुड, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू गिव योर चिल्ड्रन और गिविंग योर फ्रेंड्स और हैविंग वांटिंग टू वर्क विद योर फ्रेंड्स. कभी कभी ये बहुत रॉन्ग हो जाता है जब जो सिलेक्टेड एक्टर है उसे निकाला जाता है या रॉन्गली एलिमिनेट किया जाता है एक पर्टिकुलर रोल से, जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट अ फ्रेंड. Sometimes, but that happens in any industry. So I per se have had no bad experiences, और मैं नहीं कह सकती कि मैं नेपोटिज्म का शिकार हुई हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती. एज सच मेरा एक्सपीरियंस बॉलीवुड में हमेशा अच्छा ही रहा है. अच्छा प्रीति, यू मेंशन वन थिंग वेरी नाइस दैट हर एक को चांस मिलना चाहिए, एंड हर एक को चांस मिलता भी है सम हाउ और दी अदर. इफ़ दे आर द स्टार किड्स एंड डिफरेंट प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो हर एक को अपनी फील्ड से रिलेटेड वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वो करें. लेकिन अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज़ कि किसी का रोल निकाल के, फॉर एग्जांपल एन एक्टर इज सेलेक्टेड, या सर्टेन जो एक्ट्रेसेस हैं दीज डेज दे आर हैविंग सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स के वो सिर्फ ए लिस्टर्स के साथ काम करेंगी या सर्टन लोगों के साथ काम करेंगी. सो दिस इज समथिंग inappropriate फॉर द एक्टर हु इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, हु इज़ ऑलरेडी बीइंग सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टर्स स्ट्रगल अ लॉट. एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, चाहे वो जहाँ से भी स्टार्ट की हो उन्होंने. There is a phase of struggle, and then they achieve that limelight, they achieve that fan following, वो admirers, वो लोगों का फिरना, standing outside your homes, standing outside your cars, or even following you in different events, taking autographs, taking pictures, and right now taking selfies even. तो वो actor कितना miss करता है when the actor is on break, एंड पर्टिकुलरली जब वो ये वाली मूवीज़ नहीं कर रहा होता या सर्टन टाइम के लिए वो सोचता है कि अभी मैं मूवीज़ नहीं करूँगा. समटाइम्स उसको स्क्रिप्ट वो वाली नहीं मिल रही होती जो वो करना चाह रहा होता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इन योर केस, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ऑन ब्रेक? Again, Uzair, your question is every profession ultimately fades, and I think I always knew that once everybody has their time when they're in the limelight, and when they're doing 100 movies a day. And I was working from the age of 20 to 30. I was living out of suitcases. I was doing so many films, even in Bollywood, in Tollywood, down south, Punjabi films, Bengali films. And by the end of it, I was exhausted. So yes, every actor has their time. Every actor has a downside. But I don't think you have to look at it in that sense, because it is one step ahead. Now I'm doing different things with my time. I have a production company called Sven Entertainment, and we're soon going to make a very big film announcement where I'll be producing. And we have just launched the Pro Panja League. So I think there's a time for everything. But that doesn't mean that I've given up on acting or I will not act. Once an actor, always an actor. So we're always looking for interesting and exciting roles. But which is not to say that life is not complete or life is not fulfilled. We always have so many other roles we play.
वेल प्रीति, आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो शायद लोगों को नहीं पता हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग मूवी दैट यू आर गोइंग टू अनाउंस वेरी सून. एंड प्रो पंजा लीग, वो मुझे इंस्टाग्राम एंड सम हाउ व्हेन आई एम व्यूइंग सर्टेन स्टोरीज, तो उससे मुझे पता चलता है दैट यू आर इनटू डिफरेंट थिंग्स नाउ डेज. बट प्रीति, इन द एंड हम थोड़ा सा प्रोग्राम के एंड की तरफ भी आ गए, इनफैक्ट आपके साथ कॉन्वर्जेशन के एंड की तरफ आए. सो आई रियली वांट टू नो दैट एक्टर्स स्ट्रगल्स अलॉट. ये हमने बात की कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वी हैव सीन इन सर्टेन टाइम्स के कुछ जो एक्टर्स हैं, आपके जहन में भी कुछ 2 से 3 नाम आ रहे होंगे, कि वो जब सेकंड लीड प्ले कर रहे होते हैं तो वो थ्रू आउट सेकंड लीड ही प्ले करते रहते हैं. सो इज इट, डू यू थिंक इज इट बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स, दे डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स विद द डायरेक्टर्स डायरेक्टली, या प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर अपने पैसों को लेकर उनके साथ रिस्क नहीं करना चाहते, उनको एज लीड पे लेना, जबकि समटाइम्स दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द एक्चुअल एक्टर्स एज वेल. So, do you think it's going to remain the same the way that is going on right now? या कुछ changing आएगी उसके साथ? Again, Uzair, this is a question about the business of the film. So think of it like if you were the producer of the film, definitely you would want to take somebody who's raking in the money, who brings in the audience, the person who sells at the box office. So obviously the person who sells at the box office will be the one who's the main lead. And in terms of second lead, things are changing in Bollywood now. I think character artists are also getting their due, and it depends on the actor. You have to make the most of the role that you get and make sure you shine in that role. So like I said, it's like in any other industry. You will do what is best for your product, and I don't think we can blame the producer or the director for that. And it's not that just because they're doing second leads they'll always get second leads. There have been a lot of people who started from small roles and character roles, and gone on to become heroes and heroines, so or main characters. So I don't think that it's just because they are playing second leads that they will only get second leads. I think it's up to the person or the actor, and again luck plays an important factor. Destiny is always an important factor. Thanks so much, Uzair, for having me on your show, and all the very best, and I hope the lockdown period goes good for you. Thank you once again, Preeti, for joining us in #GMNTV. And इसके साथ we are going towards a very short commercial break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड आपको बताते हैं डिफरेंट स्टोरीज़ हमारे प्रोग्राम में आज जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. बट उससे पहले हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. लेट्स टेक अ ब्रेक. The sky will be blue, sun is yellow by the way.